हेलो दोस्तों, वेलकम टू Forexraja, आपका चैनल USDINR एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल की हमारी एनालिसिस क्या था। दोस्तों मैंने आपको कल क्लियरली बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 83.31। ये लेवल के ऊपर रहा तो बाइंग की चांसेस है, टॉप पे जा सकता है। हमने बोला था एक और लेवल, वो था 83.35, राइट। और अगर 83 पॉइंट सेफ ट्रेडर्स जो है वो अगर 83.35 के ऊपर गया तो बाई कर सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर्स है वो तो 83.31 पे एंट्री लेंगे ही लेंगे। ये मैंने बोला था आपको, करेक्ट। तो अब देखिए दोस्तों, 9 o'clock को क्या हुआ सुबह को। 9 o'clock को स्पॉट 83.31 के पास था और 9:15 9:20 तक आई मीन 10:30 तक ऊपर चला गया था ऑलमोस्ट 83.34 के पास। उसके बाद से क्या हुआ, करीबन 11:30 के बाद फॉल आया 83.31 पे सपोर्ट, उसके बाद ऊपर फिर 12 बजे के बाद दोस्तों एक फॉल आया। और जब मैंने फॉल आया था मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर स्पॉट 83.31 के नीचे रहता है तो भी मैं सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट्स है और रिवर्सल्स आने की चांस है। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2:30 2:45 के पास, इसका मैसेज भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि 2:30 से लेके 4:10 का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच कीजिए बोल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:30 2:45 से एक पिकअप आया। पिकअप आने के बाद ऑलमोस्ट 82.29 के पास एक कंसोलिडेशन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैंने टेलीग्राम पे इमेज के साथ डाला था वो था ये कंसोलिडेशन, क्योंकि लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 घंटे पूरा बाइंग आया है गाइस, पूरा बाइंग आया है। लास्ट 2 घंटे पे पूरा बाइंग किया है। उसके बाद 5 बजे के बाद एक बड़ा कैंडल आया ऑलमोस्ट 83.31 पे, और फिर से अभी 83.29 83.30 के रेंज पे वापस आ गया है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों जब भी एक फॉल आता है आपको फंसना नहीं है। इसीलिए मैंने कल एनालिसिस में भी क्लियरली बोला था कि रुक जाइए, सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकती है। और आपको वो रिवर्सल मैंने दिखा भी दिया कि ये सेलिंग रेंज नहीं है, नीचे के तरफ बाइंग रेंज बन जाती है, ठीक है। तो आज अभी 8:30 को रात को यूएसए PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने वाला है, जॉब्स का जोल्ट्स जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है दोस्तों, उसको वॉच करना है। और आज रात 12:30 बजे 12:30 को FOMC का मिनट्स है, जिसमें इंटरेस्ट रेट, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो वो एक इवेंट है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कल ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इवेंट्स को वॉच कीजिए आप। चलिए हम करते हैं एनालिसिस कल के लिए, ठीक है। और दोस्तों कल का एनालिसिस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए एक 3 घंटे का वीडियो बनाया है, ट्रेनिंग का वीडियो है। ये ट्रेनिंग वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्प हो सकती है, जिनको कैसे ट्रेड करें, क्या क्या करना चाहिए, कैसे अकाउंट सेटअप करें, बहुत सारी बातें मैंने इस ट्रेनिंग में बताया है। 3 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। फिलहाल ये वीडियो अंग्रेज़ी में है, अगले हफ्ते तक इसका हिंदी वर्शन आ जाएगी। अगर किसी को इंग्लिश वर्शन चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक कीजिए। इस ट्रेनिंग का कीमत सिर्फ 250 रुपये है, जिसमें 3 घंटे का वीडियो, और आपको इस ट्रेनिंग में जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो सब डाउनलोडेबल है आपके लिए। तो इस ट्रेनिंग को लीजिए, जिनको इंग्लिश आती है वो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, और मुझे बताइए ये ट्रेनिंग कैसा था आपको, ठीक है। तो दोस्तों कल के लिए भी हम लेवल्स मार्क करेंगे। कल के लिए भी मैं वही लेवल आएगा हमारा, क्योंकि आज का लेवल्स कुछ मीट नहीं हुआ था। सेम 83.31 वॉच करूंगा मैं, 83.31 के ऊपर 83.35 आएगा। अगर 83.35 को क्रॉस किया दोस्तों तो फिर स्पॉट जा सकता है 83.43, ठीक है। ये तीनों है कल के लिए रेसिस्टेंस, ये तीनों को वॉच कीजिए। अगर स्पॉट 83.43 के भी ऊपर जाता है वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा।
नीचे की तरफ दोस्तों अगर स्पॉट 83.31 के नीचे रहता है दोस्तों, तो आपको वेट करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 83.227 ब्रेक होने तक। 83.227 ब्रेक होता है तो नीचे आ सकता है 83.18 और 83.11। ओके, ये नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, ये बन जाएंगे हमारे सपोर्ट। मेरा सेलिंग लेवल अगर 83.11 ब्रेक होता है तभी मैं सेल करूंगा, उससे पहले मैं सेल नहीं करूंगा। अगर स्पॉट 83.18 पे वापस आता है तो भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा दोस्तों, क्योंकि जब तक 83.11 ब्रेक नहीं होता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए हमारा वीडियो भी किसी और को। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बस क्लिक करना है आपको। अगर लिंक नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग लिंक नहीं मिल रहा है, तो ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। Now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forexraja, your channel for USDINR analysis. Friends, let's see what happened today in the market, compare it with the analysis levels that I had given to you. Friends, yesterday I had given you an important level to watch out, which is 83.31, and if spot goes above 83.31, the next important level I had given you was 83.35. And I had clearly told you that safe traders should only buy above 83.35. Risky traders at any cost will enter at 83.31. I had told this, refer to my video. As you can see here today at 9 o'clock friends, spot almost opened at 83.31, very close to that. So I took two trades over here. In fact, three trades is what I took. One was in futures, two were in options. I took these three trades and immediately we saw spot going almost close to 83.34 in the next 1 hour. And after that spot came back, consolidated near 83.31 and then gave a fall. So my stop loss for my futures stop loss was not hit. I exited with a minor loss over there. Options, one stop loss was hit. The other option I am still carrying it forward friends. Now if you see here, I told in my analysis yesterday that if spot is below 83.31, I will not sell because there is an opportunity of a bounce back. And even in my Telegram channel, I kept on telling people that not to panic when this fall was happening. I'm sure many people would have panicked. I told not to panic, relax, and told also one more message in my Telegram channel that 2:30 p.m. today to 4:10 critical. And you can see here exactly at 2:30, 2:45 friends, there started a up move. That means support was taken almost at 83.25 levels and up move started, consolidation happened, and after 5 o'clock we saw these two big candles coming, and right now spot is trading almost at 83.31. Very clearly friends, many people would have got trapped in this fall thinking that things will fall. Imagine the fate of people who had bought over here where the reversal suddenly has come up. Now this people who buy at wrong places, they get stuck. So hence it is important that you need to understand analysis well and you should not panic. When the fall happened, I was not panicking at all. I kept on telling people relax, and you can see the bounce back which came after 245. You can see right here the bounce back which came. And friends, one more interesting point also for you to look today, which again I posted a message in my channel, is from 3 o'clock to 4:45 or 5 o'clock, you can, this is the area. Okay, all are buying candles friends. All these candles are buying candles. That means when this fall happened, everybody bought the fall. All the people for 2 hours buying happened, and then this movement happened friends. So you should understand how a chart works in real time. 15 minutes charts are very good indicators. They give you a story of what is happening, how are traders and retailers reacting to a fall, and that is what is the most important, because when this fall happened, even till the last candle I was watching, and that made me hold one position that I'm still holding. We have to see the result of it tomorrow. Friends, at 8:30 we have the US PMI data coming, and even the jobs opening data which is coming at 8:30 today.
If that data is positive, it can be good for the dollar. At the same time, friends, you also have to watch out for the FOMC minutes, which are coming at 12:30 in the night today. Tonight at 12:30, you will see the FOMC minutes. The FOMC minutes will give hints about the future action of the federal government relating to the interest rate decision. That also needs to be washed out, and that will also be a good indicator for whether the dollar is going to move up or whether the rupee is going to get stronger. So those are the indicators you need to watch out. And clearly, don't be aggressive on selling without understanding levels. That's my only suggestion for you. And friends, I have also created a 3-hour learning video for you for those people who are interested in Forex trading. The link is the training is in English. It is also coming with handouts and materials that I've used in the training. The link is below in the description. You can click on the link, take the training for 3 hours. It just costs 250 rupees, friends, but it covers a lot of important topics which helps new traders who want to start their career in Forex trading. Even the experienced people can take up the training to tell me how the training has been, so that I can improve that further. 250 rupees, not a big deal, friends. So please encourage me, take the training and let me know your thoughts. All right. So let's do the analysis for tomorrow, friends. With this said, let's see what are the levels that we will watch out for tomorrow. So friends, for tomorrow also, the most important level I will watch out for is 83.31. Above 83.31, friends, I'm expecting spot to get back to 83.35. And above 83.35, I expect spot to go and touch 83.43. Okay, this is the upside levels for tomorrow. These are the resistances I will watch out for. Yes, if spot is able to break 83.35, the movement will be fast, my dear friends. Watch out for this. All right. On the downside, friends, if spot is below 83.31, then the most important level that I will watch out for on the downside will be 83.227. 83.227. If spot breaks 83.227, then on the downside we can expect 83.18, and below 83.18 spot can even go to 83.11. Okay, these are the downside levels. These are the supports on the downside. Between 83.21 and 83.227, this is a no trade zone. No trade. Don't trade at all. Don't take buy or sell calls in this area. As I have shown you today also, reversal came and it will become a problem. So don't take trades. I will sell only when spot goes below 83.11. If spot goes, let's say, to 83.12 and reverses, I still will be a buyer, because I know my levels when I want to get into the sell part of this trade. So this is my plan for tomorrow, friends. I hope you're liking the video. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description, friends. Click on that and join. And if you're not finding the training link or the Telegram channel link, then please WhatsApp me on the number given above, and I shall share the details with you on WhatsApp. All right. Thank you so much, friends, for the time. Have a wonderful day. We'll catch up with you in the market tomorrow. Bye-bye.